ठीक है. So these are the rights which are given under article, or you can say fundamental rights which are given in part 3. And last and very important fundamental right of the Constitution of India is article 32, which is called as right to remedy. अगर ये right to remedy नहीं होता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनका कोई मतलब नहीं होगा, ऐसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था. नाउ राइट टू रेमेडी मीन्स व्हाट? एनीवन नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमेडी? Yes, anybody knows what is the meaning of remedy? Cure of disorders. Sorry? Cure of disorders. To cure. Okay. Okay. And also you can see to get it corrected, or to get it what you can say restored back, or you can say अगर किसी का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए एक जो मैकेनिज्म बनाया गया है वो बनाया गया है आर्टिकल 32 में. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सारे फंडामेंटल राइट तो दिए गए कि एवरीबॉडी शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग रिलीजन, फ्रीडम ऑफ लाइफ, देन राइट टू इक्वालिटी, एवरीथिंग इज गिवन. बट अगर स्टेट उसको वायलेट करता है और उसके बाद उसको रेमेडी के लिए या उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए अगर कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया होता तो फिर देयर वुड हैव बीन नो यूज ऑफ दोस फंडामेंटल राइट. सो आर्टिकल 32 क्रिएट्स अ मैकेनिज्म that if anyone's fundamental rights are violated, he can go to the Supreme Court, he can go to the judiciary to get his violated fundamental rights restored back. That is what is there in Article 32. That is why it is the soul of the Constitution of India. Yes, sir. Sir, you want to say something? No, sir. Okay. So what is that mechanism created under Article 32 that we will discuss here? That it is the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for enforcement of the rights conferred by these parties guaranteed. So going to Supreme Court is also a fundamental right. That अगर आपके फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाना ये भी आपके लिए एक फंडामेंटल राइट है. एंड लाइक फॉर एग्जांपल अब किसी का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताओगे कि लाइक अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हु वायलेट्स द राइट, फंडामेंटल राइट्स? स्टेट. अगर स्टेट आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप जो केस फाइल करोगे सुप्रीम कोर्ट में वो जो केस होगा दैट विल बी केस अगेंस्ट द स्टेट. सो दैट इज व्हाई वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो होते हैं, जो केसेस होते हैं, दिस केसेस आर नॉर्मली लाइक दिस पर्सन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे राइट ऐसे केसेस होते हैं. एम आई राइट? Yes, sir. Yes. Right. So whenever a case is filed in Supreme Court and if that case is a violation of the fundamental right, such cases are called as writ petition. समझ में आ गया writ petition किसको कहा जाता है? There are various types of petition in Supreme Court. और अगर फंडामेंटल राइट वाले वायलेशन वाले अगर जो केसेस फाइल किए जाते हैं उनको कहा जाता है. So those cases which are filed into the Supreme Court in case of violation of fundamental rights are called as the writ petition. अब इनको writ petition इसलिए कहा जाता है because जब भी कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है. इफ सुप्रीम कोर्ट believes that or if Supreme Court thinks that yes it is a violation of fundamental right of that particular person, then Supreme Court gives certain order to the state to restore back the violated fundamental rights. These orders are called as writ orders. WRIT, writ orders कहा जाता है. और जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का जो केस फाइल किया जाता है उसको कहा जाता है writ petition. समझ में आ गया? What is the meaning of writ petition? Yes, sir. Right. So the Supreme Court shall have the power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus. Habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. These are the various types of writs which are issued by the Supreme Court in case of violation of fundamental rights of any citizens of the country. अब ये जो writ petition है, जो writ orders हैं, इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं. लाइक इन केस ऑफ अलग जैसे हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो जिस कैटेगरी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है उसके हिसाब से अलग अलग रिट्स इशू किए जाते हैं.
No, what is the meaning of this habeas corpus writ? Habeas corpus writ का Sir, मतलब क्या होता है? Daneshwari, to can you have the please mute body. yourself? Sir, to Daneshwari, can you have the please? body of. Okay. Yeah, fine, sir. Daneshwari, please mute yourself. Okay. Am I audible now? Yes, sir. Okay. So the Supreme Court shall have the power to issue the directions or orders, including the writs in the nature of habeas corpus. Habeas corpus Supreme Court तब इश्यू करता है कि जब किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया गया है. तो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में देर आर सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में कि किसी भी इंसान को इलीगली अरेस्ट नहीं किया जाता है. तो विच आर्टिकल हैज the provisions related to rights against the illegal detention? Which articles of the constitution use the protection of the Sir, illegal protection? Article Illegal 22. arrest? 22. Article 22. Yes. So if any person who is been arrested by the state and he has been not been given a appropriate reason or a ground on which he has been arrested and is not produced in front of the nearest magistrate within 24 hours after the detention, and if it is not released within 3 months of preventive detention, in certain cases, is such type of cases, that person or relatives of any person or the person who knows him can directly go to the Supreme Court and ask for the Supreme Court to release that person. The Supreme Court will call the state and check it out. He really the Supreme Court has like sorry the investigating agency or police has arrested that person illegally. In certain situation, the Supreme Court issues a writ order to release that person, and that order is called as habeas corpus order. The literal meaning of habeas corpus is to produce that one person in front of the court. That is what is the meaning of habeas corpus. But actually the habeas corpus का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को अगर illegally arrest किया गया है, illegally detain किया गया है, और if he is not been produced in front of the nearest magistrate within 24 hours, then the court can ask the state to release that person. और उसके लिए जो ऑर्डर इशू किया जाता है उसको हेबियस कॉर्पस ऑर्डर किया जाता है. और इलीगल डिटेंशन के केस से रिलेटेड जो केस फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, इसको हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन कहा जाता है या हेबियस कॉर्पस पिटीशन कहा जाता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. राइट. ओके. अब मुझे बताइए कि सपोज किसी इंसान को पुलिस ने लीगली अरेस्ट सॉरी इलीगली अरेस्ट किया, उसको पकड़ा है और इट इज नॉट बीन मेंशन्ड इन द स्टेशन डायरी और लीगली कहीं मेंशन नहीं किया कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है. Suppose if you go and file a case to the Supreme Court, says कि this person has been illegally detained by the police, but पुलिस अगर वहां पर कोर्ट में आकर अगर बताती है कि हमने तो पकड़ा ही नहीं है, he is missing, क्या किया जा सकता है ऐसे सिचुएशन में? Are you getting my like situation? Like for example, suppose Yes. the police have detained a person or like taken in the custody, but legally they have not shown any arrest. They have kept that person somewhere. They have hidden that person somewhere, and if you go in Supreme Court, they say that this person is missing and he has been taken by the police and he has not been produced in front of the magistrate or he has been not given a reason that why he has been arrested. Then the court will call the police and ask where that person is, and the police says we have not arrested him. So what court shall do in such situation? अगर आप जज होते तो क्या करते? Sir, I would have directed the police to have the body of that person. Body, dead body. No, sir. Okay, dead or live? No, live, sir. Alive. Suppose if that person is dead. तो भी लेके आओ, कैसे भी लाओ. Yes. So habeas corpus का जो meaning है to produce a body का मतलब होता है कि if that person is not what you can say his person is not what you can say detained by the police, then Supreme Court ask or the judges ask the police authorities to go and find out that person where he is and bring that person in front of us. समझ में आ गया? ऐसे हो सकता है. So that is why it is called as habeas corpus. Now second is mandamus. Mandamus means what? कि suppose if any police public authority or any state authority or any government officer if he is not performing his duty properly, and because of that if anyone's fundamental right is violated, then in such situation
the Supreme Court or the court can direct that public authority or public, what you can say, the officer or the government officer to perform his duty properly so that his violated fundamental right is restored back. So that type of order is called as mandamus. You got a difference between habeas corpus and mandamus? In habeas Yes, corpus, sir. इलीगल डिटेंशन के केस में जो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देता है उसको हेबियस कॉर्पस कहा जाता है. और अगर कोई इंसान, कोई पब्लिक ऑफिसर, if he is not performing his duty properly and because of that if anyone's fundamental right is violated, और ऐसी सिचुएशन में जब कोर्ट उस पब्लिक अथॉरिटी या ऑफिसर को जब ऑर्डर देता है तो उसको मैंडमस कहा जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज आई वांट टू गिव अ स्पीच, आई वांट टू लाइक show a movie, and if a police commissioner is stopping me from giving a speech, then I'll go to the Supreme Court. Supreme Court will order that police commissioner that please let him give the speech. तो इस तरीके का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देता है उसको हम क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडमस? अ ऑर्डर इश्यूड बाय द जुडिशरी Yes. for a public authority or a government officer to perform his duty properly so that no one's fundamental rights is violated. Is it clear? Yes, sir. Now second is, उसके बाद होता है क्यूए वारंटो. क्यूए वारंटो writ is issued by the Supreme Court in case of violation of right to equality. Right to equality का जो फंडामेंटल राइट है, that everybody should be given an equal opportunity, अगर इस केस में अगर वायलेशन होता है तो उस केस में जो रिट इश्यू किया जाता है या इस तरीके का जो रिट फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, that is what called as क्यूए वारंटो रिट पिटिशन. Clear? Any doubts about Mhm. quo warranto? So habeas corpus is issued in case of Article 22. Mandamus is what you can say issued in case of any public authority is not performing duty properly, and quo warrant is issued in case of violation of right to equality. And prohibition and certiorari, these are the judiciary type of, what you can say, the writs. Like for example, if the case is a violation of fundamental right, and if it is being tried or if it is being running in front of the lower court, and if the person concerned or the party concerned with that particular case, if he feels that this is a violation of fundamental right case and it should be run in front of the Supreme Court directly, he can ask the Supreme Court to take the case towards itself. So in such situation, the Supreme Court stops the lower courts or prohibits the lower courts to take that case and take it towards itself. That is what is called as prohibition. And certiorari means what? कि अगर कोई फंडामेंटल राइट वाला अगर जजमेंट है और लोअर कोर्ट्स ने अगर वो जजमेंट दिया है तो उसको कैंसिल कर कर सुप्रीम कोर्ट वापस से उसको अपने पास वापस से शुरू कर देता है, तो उसको certiorari कहा जाता है. तो व्हाट इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड certiorari इज दैट in case of prohibition, the trial is still going on in the lower court, but in case of certiorari, already the judgment is given by the lower court, and it will be again given by the what you can say, by the Supreme Court. Like for example, recently we can see that Kerala High Court has given a judgment related to the Hadia's case, which we have discussed in yesterday. So Kerala High Court has already given the judgment, but uske baad the Supreme Court has cancelled the judgment given by the Kerala High Court and given its own judgment. So that is what is called as certiorari writ petition. और अगर ऑलरेडी लोअर कोर्ट्स में केस चल रहा है उसको बीच में से रोक कर जब सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास लेता है उसको प्रोहिबिशन कहा जाता है. तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हमारा जो जुडिशरी है किसी भी इंसान का जो फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है उसको डायरेक्टली रेमेडी करता है या उसको डायरेक्टली रिस्टोर करता है. सो under Article 32, any person can directly go to the Supreme Court for restoration of his violation of his fundamental rights. So this is again a fundamental right to go to the Supreme Court under Article 32. So understood, like last statement यहाँ पर ये कहा गया है कि the right guaranteed by this article shall not be suspended except or as otherwise provided by this constitution. तो ये जो right to go to the Supreme Court जो right है ये किसी भी केस में suspend नहीं किया जा सकता है या किसी भी केस में इसको निकाला नहीं जा सकता. अगर इसको निकाला गया तो फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जान नहीं रहेगी. Is it clear? Yes, sir. So all of you understood Article 32, why Dr. B.R. Ambedkar called this article as a fundamental right? Sorry, it's the heart and soul of the Constitution of India. Yes, sir. Check it.